Good evening, everyone. Here we are on the first day of September. फर्स्ट महीने का पहला दिन है और सितंबर के करंट अफेयर्स का पहला दिन है और ये सितंबर सीरीज का पहला दिन है। तो आज की शुरुआत काफी अच्छे से करते हैं एंड मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। लेट्स मार्क दिस मंथ सितंबर एज अ मंथ ऑफ डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड फोकस्ड sincere studies. So, my name is Mayur and I'm a senior faculty at Civil Services Achievers Point. And this whole month, I'll be taking the lectures of current affairs. That means we would be analyzing important current events of the day. The source of these current affairs is the standard newspapers. Out of so many, we have selected three: the Assam Tribune, the Indian Express, and the Hindu. Here are the five important articles which we thought are important enough to be discussed and shared with all of you dreamers and aspirants. These topic are from different sections of the GS. For example, first we would be discussing Assam SIR, which comes from GS2 and GS5. Also, it has some implication in GS1 on society. Then we'll go back to the art and culture section. It is from GS5 Art and Culture plus Heritage of Assam. Plus, it is directly from GS1. This can be converted or this can be a part of GS1 Art and Culture as well as example of colonial rule. That means modern India. The next issue that we would be discussing is from GS2 International Relation, India and China border issue, especially in the context of new evolved paradigm shift in the geopolitics and India-Japan ties. Although both these articles are from GS2 International Relation, and the last topic of discussion would be medical tourism. This medical tourism will come from GS2 as health and GS3 as part of economy because medical tourism in itself is an part of the export economy. So without wasting a time, let's get started. So what is Assam SIR? SIR stands for Special Intensive Special Intensive Revision. Okay. Uh, Special Intensive Revision has been in news of lately for multiple reasons. There were some allegations on Election Commission of India. There were some reports floating around discussing the faulty electoral list, and SIR अभी बिहार में भी चल रहा है, and there are political implications regarding this. So today we saw the news that Assam के context में भी SIR होगा, Special Intensive Revision होगा. Why is it important? First, it is very important to balance like this precision of list with compassion. Why? Because it is essential to ensure that vulnerable communities are not excluded. Okay, so let's take a look at the context of it. So Assam's upcoming SIR, Special Intensive Revision of Electoral Rules, carries unusual weight. It is extremely important to take care of this, as unlike other states, Assam का एक historical context है, historical contestations हुआ है, मतलब there has been contestant
claiming for political right, and that issue is complex because of the migration, the identity, and the citizenship. Since last 50 years, last 60 years, Assam has seen so much of immigration, illegal immigration has caused migration, like centuries old migrations from different states because of different regions, etc. etc. एंड इसलिए आसाम का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है. ओके. तो लेकिन ये एसआईआर जो है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है, ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, इट्स एक्चुअली अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, अ पॉलिटिकल कम्युनिटी मेंबरशिप. कभी भी अगर आप बेसिक डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, इट कम्स और इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स में द बेसिक राइट इज वोटिंग राइट, है ना, राइट टू वोट, है ना. ये वोटिंग राइट इज द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और ये वोटिंग राइट आपको तभी मिलता है अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है. तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है, बिकॉज इट इज द रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी मेंबरशिप. अब अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर अच्छे से हो गया, देन इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस द इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल सिटीजन, क्योंकि जो एलिजिबल है, जो लिस्ट के बाहर है, उनको ऐड कर देंगे. और जो अननेसेसरी है, जो फॉल्टी है, जो फेक आइडेंटिफिकेशन के साथ है, उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा, है ना. सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड दोज हु आर एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूड दोज आर इनएलिजिबल वोटर्स, राइट. बट like any other operation or any other program, this also has a challenge. First and foremost, difficult terrain. Assam has a difficult terrain. इसमें hills है, forest है, riverine regions है, marshy lands है, hinterlands है, बहुत interior part है जहाँ पे borders regions है, जहाँ पे वोटर्स तक पहुंच पाना, उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर पाना, ये इजी नहीं होगा. Second challenge is lack of documents. Not everybody has documents, right? Especially amongst rural population, amongst the marginalized group. So because of the absence of document, there is a risk of wrongful exclusion. शायद ये लोग डिजर्व करते लिस्ट में होना, लेकिन ये लिस्ट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट इस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं है. The other challenge is there are people who have traumas from a past NRC, National Register of Citizens, and role revision. So this previous experience leads to public anxiety and mistrust. जिनके लिए आप ये कर रहे हो, उनको ही अगर इस सिस्टम के ऊपर भरोसा ना रहा या फिर डाउट लेने लग जाए तो दिक्कत तो होगी है ना. तो पास्ट ट्रॉमा from NRC and role revision, this has led to public anxiety and mistrust. So in this scenario, if you wish to have some SIR successful, we will have to follow certain principles, right? अगर आप चाहते हो कि SIR का जो प्रोग्राम है, जो जो पॉलिसी है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर इफ यू वांट दैट इट शुड बी एज एन सक्सेसफुल थिंग, देन वी ऑल ऑफ अस एंड गवर्नमेंट विल हैव टू मेंटेन सर्टेन प्रिंसिपल्स. वो प्रिंसिपल्स क्या है फॉर इम्प्लीमेंटेशन? द प्रिंसिपल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, these are first and foremost transparency. You will have to maintain the transparency. Everything should be transparent. Okay. So we will have to draft the list. The government has to draft the voter list in local languages. है ना? Then you will have to provide reasons in written for deletions of certain names. And you will have to make the process visible. चुपचाप कहीं पे किसी कोने में नहीं, लोगों के आंखों के सामने ये प्रोसीजर होने जरूरी है. दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड सी द प्रोसेस हैपनिंग. किसी
डिस्ट्रिक्ट के किसी कोने में किसी पुराने बिल्डिंग में ये प्रोसीजर करोगे तो वो नहीं होगा। इसको आपको विजिबल करना पड़ेगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, इसके बारे में बात करनी होगी, इसको पब्लिसाइज करना होगा। दैट्स व्हेन द प्रोसेस विल बिकम विजिबल। Then you will have to take care of the accessibility, and then you'll have to redress the grievances. लोगों की जो दिक्कतें आ रही है उसको redress करना पड़ेगा. You'll have to resolve their problems. How will you do it? You'll have to do it through multilingual awareness campaigns. मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, आसामी में, आसामी के भी डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट जो है, मतलब अगर आप साउथ अपर असम में जाओगे तो उसका डायलेक्ट अलग है, लोअर असम में डायलेक्ट अलग है ना? तो आपके डायलेक्ट के हिसाब से लिंग्विस्टिकली थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज में आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा, कैंपेन कराना होगा. देन you'll have to generate local help desk. फिर you have to create simple appeal mechanism. If people have grievances, those should be redressed. उसका solution देना पड़ेगा. Impartial adjudication with legal aid. जिनको लीगल एड की जरूरत है, लीगल हेल्प की जरूरत है, उनको लीगल हेल्प देनी होगी गवर्नमेंट को. एंड देन next two principles that you'll have to follow are neutrality and the capacity building. You will have to put in charge the politically neutral officers. Then you will have to train them in legal and communication skills. Field work के लिए adequate resources देने होंगे. So, if you follow these principles of transparency, accessibility, and grievance redressal, and then neutrality and capacity building, we stand a chance जहाँ पे असम का एसआईआर सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाएगा. अब इसमें कुछ एथिकल डायमेंशंस भी है. वो क्या है? एक तो असम में जो लोग रहते हैं, दो पीपल हु लिव इन असम, देयर आइडेंटिटी इज वेरी लेयर्ड, है ना? सम हैव माइग्रेटेड हियर. यहाँ पे कुछ लोगों के इंटर मैरिजेस हुए, सम हैव डेवलप्ड लोकल टाइज, है ना? So there are different ways through which they have assimilated in Assamese society. So Assamese identification का बहुत ज्यादा layers है. ओके. ऑल्सो एथिकल डायमेंशन में ये एस्पेक्ट आ जाएगा कि दिस प्रोसेस मस्ट अवॉइड ट्रीटिंग बिलोंगिंग एज बाइनरी. बाइनरी का मतलब होता है इधर दिस और दैट, है ना? दिस और दैट, सिर्फ दो ही चीजें नहीं हो सकती. हाँ या ना के बीच में भी कुछ हो सकता है. ये ये जो बाइनरी ट्रीट करने वाला ना, इधर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, विल हैव टू रिकंसिडर इट, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा. Then the ethically this process should focus on reassurance. It should focus on inclusion and then building the democratic trust. ये these are the ethical dimension associated with Assam SIR. If implemented, इसके implications क्या होंगे? अगर पॉजिटिव implication क्या हो सकता है? अगर ये प्रोसेस अगर फेयर रहा, if process is fair, then this systematic, special, intensive. ओके. तो अगर पॉजिटिव रहा, इफ फेयर रहा, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोग्राम है, इट कैन रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशन. Institutions mean which institution? The administrative institution which are going to conduct this SIR, the political democracy, the political right, by ensuring that inclusion of those who have been excluded and exclusion of those who are illegally occupied the political rights. What could be the negative of it? If this process is rushed through, or if process is opaque, if it is not transparent, if the communication is not in local language, then this might lead to deepening of fissures which already exist in the Assamese society, and then that would eventually lead to erosion of trust in the political democracy. So, in a nutshell, this spatial intensive revision
is more than just an administrative task. This is going to decide the political future of Assam. It is going to decide the trust of the people in the institutions. And it is a test of reconciling accuracy with justice. This will protect both the electoral integrity, and citizens' equal political rights. That is why Assam SIR is going to be a historical moment. Let's try and solve this question. In the context of Assam's Special Intensive Revision SIR, which of the following principles are emphasized to ensure both accuracy and inclusiveness? First, transparency in process and communication. Yes, correct. So option 1 is correct. So option B is eliminated because it does not have option 1. Second is accessibility with robust grievance redressal mechanism. Yes. So since statement 2 is correct, option C is eliminated because it does not have to. So now we are left with option A and B. Option A contains 1, 2, and 3. Option D contains 1, 2, 3, and 4. That means 3 has to be the correct. Let's not even read option number 3. Automatic inclusion of all residents irrespective of the documentary proof. Absolutely not. Then what is the purpose of SIR? So statement number 4 is eliminated. The correct answer is option A. Let's move to the second article. Article is about Vrindavani Vastra. This Vrindavani Vastra is the ultimate example of how colonialism has impacted the world's functioning. अब आप ये देखिए, मैं आपको आर्टिकल में आगे जाने से पहले बताता हूँ, आगे विल मूव फॉरवर्ड, बट उसके पहले आप ये देखिए, ये वृंदावन इस तरह है क्या? ये वृंदावनी वस्त्र श्रीमंत शंकर देव जो आसाम के वन ऑफ द हाईएस्ट और वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड पर्सनालिटीज है, उन्होंने 16th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में श्री कृष्ण भगवान के लाइफ के ऊपर एक डिजाइन किया हुआ क्लॉथ है, वृंदावनी वस्त्र। अब वो कहाँ पे है? इंग्लैंड के पास है, लंदन में। नेशनल म्यूजियम ऑफ लंदन में ये पड़ा हुआ है। एंड जो हमारा है, जो हमारे भगवान के लिए हमारे हाईएस्ट पर्सनालिटी ने डिजाइन करवाया था, वो चोरी करके लेके गए ब्रिटिशर्स। एंड नाउ आवर सीएम ऑनरेबल शर्मा सर हैज टू रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स टू गिव अस दैट बैक, एंड दैट नॉट टू परमानेंटली, ओनली फॉर 1.5 साल। एक 1.5 साल के लिए हमको बस डिस्प्ले पे रखने के लिए हमको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एंड ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि वी आर ग्रेशियस इनफ to give you your cloth back so that you can show your population what it is for just 18 months। 1.5 साल के लिए ये लोग दे रहे हैं, 400 साल बाद। क्यों? क्योंकि ये लूट कर लेके गए थे। ये कंटेक्स्ट है इसका। इससे ज्यादा रूड एरोगेंट एक्सप्रेशन कोलोनियलिज्म का 21st सेंचुरी में नहीं हो सकता, राइट? तो आर्टिकल में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वृंदावनी वस्त्र जो है ना, ये श्रीमंत शंकर देव सर के गाइडेंस के अंदर हुआ था। किसके लिए हुआ था? कोच किंग नर नारायणन। जो कोच किंग है ना, नर नारायणन, जिन जो कम्युनिटी आज हम लोग सुनते हैं, कोच राजवंशी कम्युनिटी ऑफ असम, उनके जो राजा थे, राजा नर नारायण 15th सेंचुरी में, उनके लिए श्रीमंत शंकर देव के गाइडेंस में ये क्लॉथ बनाया गया था 15th सेंचुरी में। इट वॉज डिपिक्टिंग कृष्णाज लाइफ, एंड दिस वॉज stolen by Britishers, and now they have agreed to lend it
to Assam government for only 18 months in 2027 with one condition. They will give to Assam government to display the cloth woven by the Shriman Shankar there for Coach Raja with one condition, provided that Assam builds a state-of-the-art museum with required technological standards. I don't know whether to laugh or cry about this news, but I'll give it to the enlightened minds of the listeners. तो basically क्या है इसका journey? This Vastra reached to British Museum via Tibet in 20th century. And parts of this was cut into pieces, and parts of it are sitting in different museums of different European countries, out of which one country has agreed to lend that piece of cloth for 18 months, provided we have the qualitative museums. What an irony. Anyways, uh, in the light of this current happening, let's just analyze and let's just try and see what are the concerns associated with the artifacts and cultural dimensions of Assam. So, concerns kya hai? Assam lacks adequate preservation infrastructure and expertise. In current situation, the Assam State Museum has multiple artifacts, and those have deteriorated due to poor conservation technologies. ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स या म्यूजियम की बात नहीं है, ये ब्रॉडर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है. दिस रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर निग्लेक्ट ऑफ असमीज हेरिटेज एंड दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. क्योंकि ये जो है ना, बढ़िया सा म्यूजियम बना देना, टेक्नोलॉजी लेकर आना, प्रिजर्वेशन करना, ये 1 महीने का काम है. पॉलिटिकल विल दिखा देंगे, 1 महीने में ये सब हो जाएगा, बट उसको प्रिजर्व करके रखना एंड इस आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू करना, ये तो कल्चर का काम है ना. इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आप में हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एनीवेज, मूविंग फर्दर व्हाट आर द वाइडर इश्यूज. फर्स्ट, लाइक हिस्टोरिकल साइट्स है, ब्रिटिश एरा स्ट्रक्चर्स है जो असम में अभी एग्जिस्टिंग है, ब्रिटिश एरा ब्रिजेस है, एंड देयर आर ओल्ड इंस्टीट्यूशन दैट आर डिकेइंग ड्यू टू public indifferences towards them and also because of the big government action. The another problem with the society is with the general society is lack of cultural responsiveness. This has compromised the heritage conservation. Like every problem has some ray of hope, like every problem has some opportunities. Here is also one opportunity. During this situation, we get an opportunity of establishing modern preservation facilities that have the potential to safeguard our heritage and strengthen the cultural identity of Assam. These heritage sites, if maintained properly, can also serve as tourist attraction and a symbol of civilizational continuity, you know, because we often tend to forget that culture is what we have and civilization is what we are. All right, let's try and solve this MCQ. The Vrindavani Vastra recently in news is significant because it was woven under the guidance of Sriman Shankardev. Yes, so statement one is correct. All options contain option one. So we'll move forward. It depicts episode from the life of Lord Krishna. Yes, option two is correct. So C is gone. It was originally created at the request of Coach King Naranarayanan. Yes. So three is correct. So now we are left with four. It is permanently housed in National Museum of New Delhi. What nonsense. It is in London. So correct answer is A. All right. India and China border issue. It is part of GS2, international relation. Why was it in news? Because recently currently Prime Minister Modi is in Tianjin, is in China attending Shanghai Cooperation Organization, SCO meeting.
Here, Prime Minister met Chinese President Xi Jinping on the sidelines of SCO summit in Tianjin. This there was a focus on border peace, there was a focus on trade, and there was a focus on regional cooperation. What is the border issue? In border issue, these two leaders noted a successful disengagement in 2024. गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था 2020, उसके बाद से देयर वाज अ ब्रेक. लेकिन 2024 में कजान में जो मीटिंग हुआ, कजान मीटिंग के बाद थोड़ा सा ओपन अप हुए थे कॉन्वर्सेशन विथ दिस करंट ऑनगोइंग एससीओ समिट. दिस ओपनिंग हैज ब्रॉडन और अभी एक्चुअली अच्छे से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है. दे हैव रीअफर्म कमिटमेंट टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रीजन. दे हैव अग्रीड दैट ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो ओवरऑल जो रिलेशन है इंडिया चाइना को उसको इम्पैक्ट ना करे, ना ही वो उसको डिफाइन करें, है ना. तो बॉर्डर इशू तो हो गया. बायलैटरल रिलेशन में क्या डिस्कशन हुआ? दे अग्रीड टू स्ट्रेंथन द पीपल टू पीपल टाइज. हाउ? डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा फैसिलिटेशन, कैलाश मानसरोवर यात्रा. आज से मतलब जब ये 2020 में बंद हुआ तब तक हमारे रफली 600 फ्लाइट्स चाइना जाती थी. इंडिया चाइना के बीच में 600 फ्लाइट फ्लाई किया करती थी, राइट. और बीच वो गलवान के बाद ये पूरा ही बंद हो गया. बट नाउ both these leaders have decided to increase the people to people ties और उसमें डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आएगा, वीजा फैसिलिटेशन भी आएगा. एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो तिबेटियन रीजन में चला जाता है, उसके लिए उसको फैसिलिटेट चाइनीज साइड करेगी. दे ऑल्सो डिस्कस द बैलेंस्ड ट्रेड, क्योंकि अनलाइक इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन जहाँ पे यूएस के साथ इंडिया का $40 बिलियन का, विथ इंडिया विथ यूएसए, इंडिया हैज $40 बिलियन का सरप्लस ऑफ ट्रेड. वही चाइना के साथ में इट इज ट्रेड डेफिसिट ऑफ $100 बिलियन, राइट. तो इफ इंडिया कंटिन्यूज इट्स ट्रेड विथ America, India would benefit. But if India continues trade with China on the current terms, then India would keep on losing क्योंकि इंडिया का $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, right? So both these leaders ended up having the conversation regarding balancing of the trade, how it is possible to balance that trade, like trade deficit, say, if not trade surplus, at least how to reduce that trade deficit. They spoke about reduction of this deficit, enhancing the investment, then stabilizing the global trade. Because of the war and conflict, the global trade has disturbed. They have disturbed the global trade. Then they also spoke about mutual support in combating terrorism and promoting fair trade in multilateral platforms. They reaffirmed India and China as development partners and not rivals. This SCO summit had a special geopolitical context to it. This meeting took place amid यूएस ट्रेड वॉर्स, जो चाइना के ऊपर 125-145% लगा दिया था, और फिर वो चाइना ने जैसी आंखें दिखाई, दे रिड्यूस इट टू 30%. एंड देन इंडिया के ऊपर पहले 25%, देन पनेटिव 25%, इन टोटल 50% ट्रेड लगा दिया है, टेरिफ लगा दिया है. इट हैज ट्रांसलेटेड इनटू यूएस का ट्रेड वॉर, है ना. एंड इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, Prime Minister Modi has stressed on the strategic autonomy, mentioning that these ties should be avoiding a third country lens without mentioning the name of United States. Obviously, third country lens is reference to the in United States. On the sidelines of it, let's take a look at Myanmar relation. यहाँ पे सीनियर जनरल जो है मिनोंग हाइलोंग के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी
की मुलाकात हुई. They spoke on the sidelines of the SCO. India reiterated support under Neighborhood First policy, Act East policy, and Indo-Pacific policies. And he asked for the fair and inclusive elections and Myanmar-led peace process. Myanmar should experience the peace, but that should be led by the Myanmar and not the outsiders. यहाँ पे एक important aspect ये है ना कि on the sidelines of it, something that has happened जो मीडिया ने अच्छे से कवर नहीं किया है, और वो है कि Prime Minister Modi, along with Chinese President Xi Jinping, also met Kai Ki. Why it is important to meet this Chinese leader Kai Ki? Because Kai Ki is the chief of Politburo. The Communist Party, चाइना की जो है, उसके वो चीफ है. He is the one of the top most authority in China after Xi Jinping. Okay, and some see him as the uh, next person to succeed Xi Jinping, and to be seen with him and to have the have the conversation, to have the conversation gives the signal to the world that India is not only looking at the current Chinese situation, but also banking on the future prospects of India-China relations. Meanwhile, during this bilateral conversation, Prime Minister has invited Xi Jinping to the BRICS summit, which is happening in India in 2026. So let's try and solve this MCQ. At the 2025 SCO summit in Tianjin, Prime Minister Narendra Modi and President Xi Jinping agreed on which of the following? Strengthening people-to-people ties through direct flights and visas? Yes, absolutely. अगर one correct है, statement one is correct, option B is eliminated. Ensuring that border disputes do not define overall relation? Absolutely correct. Then option A is eliminated because it does not have statement two. So we are left with 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4. So let's not even read one third statement because it has to be correct. Permanent resolution to boundary issue through UN mediation? Absolutely bullshit. It's rubbish. UN, India will not accept any third party intervention. So option is C, 1, 2, and 3. Okay. Let's move forward. India Japan ties. The optics of Indian Prime Minister meeting Japanese government officials showed that India Japan ties are stable amid the global churn. जो भी जियोपॉलिटिकली अपहीवल चल रहा है उसके बीच में इंडिया जापान टाइज आर स्टेबल, ये दिखा. So before going to SCO, Prime Minister Modi visited Japan for the 15th annual summit. इस समिट में क्या हुआ? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात हुई. जापानीज इन्वेस्टमेंट टारगेट इन इंडिया हैज बीन रेज्ड टू 68 बिलियन. 68 बिलियन इन्वेस्टमेंट जापान इंडिया में करेगा. Approximately 170 memorandum of understanding were signed. They also had 2035 vision statement that outlined 8 areas ranging from economic security, green transition, mobility to tech cooperation, etc. They also spoke about economic security partnership. This economic security partnership relies heavily on resilient supply chains, on critical infrastructure, semiconductor collaboration. Uh, this semiconductor collaboration is important amid China's rare earth restrictions. Showcase their partnership in high-speed rail bullet train project, and Prime Minister also visited Miyagi's semiconductor factory. The India-Japan ties are important from the perspective of the security and strategic cooperation. They updated 2008 security partnership. This is annual NSA level dialogue between India and Japan. They agreed for the stronger engagement in Quad, Indo-Pacific cooperation, and about UNSC reforms.
Both of them condemned the North Korea's missile and nuclear program and cross-border terrorism without naming Pakistan. They spoke about people to people and connectivity. Quote is next generation state prefecture partnership for grassroots cooperation. And they also gave boost to direct flight connectivity. It has a geopolitical subtext, मतलब एक लेयर है जियोपॉलिटिक्स का इस सिचुएशन में, है ना? ये विजिट आया है इंडिया का जापान में amid the US tariff pressure that has affecting India as well as Japan. जापान्स concern जो ईस्ट चाइना सी में है या ट्रेड टेंशंस में है with US, this has shaped the current context. Modi, Prime Minister Modi chose Japan as his first stop before meeting Xi Jinping. It also means they are signaling a stable, reliable India-Japan ties amidst turbulence in global order. The significance of it is its meeting का significance क्या है? That India-Japan partnership remains stable, resilient, and forward-looking, combining economic modernization, security cooperation, and geopolitical alignment in Indo-Pacific. All right. All right. Let's solve this MCQ. 15th India Japan included which of the following? Updation of 2008 security partnership to include annual NSA level dialogue? Yes. So option B eliminated. Launch of 2035 vision statement covering areas such as economic security, green transition? Yes. है ना? So joint condemnation of North Korea's missile program? Yes. Option 3 is correct. So ये भी गया. Agreement on trilateral maritime security pact with United States? Nonsense. Answer is A. This is our final article. The title was Why NRIs, non-residential Indians, are choosing India for medical tourism. Context ये है कि rising healthcare cost abroad, especially in the West, US में या Western Europe में, वहां पे healthcare का खर्चा extremely high है. It's humongous. Coupled with India's affordability and along with quality, are making India the top choice for the medical tourism and NRI health insurance. What is the affordability advantage? Surgeries in India cost 60 to 90% less than in US. Example, हार्ट की जो बाईपास सर्जरी है वो इंडिया में 5 से 8 हजार डॉलर में हो जाती है, वही यूएस में लगभग 70 हजार से लेकर 1.5 लाख US डॉलर तक लग सकता है. 150,000 डॉलर्स तक यूएस में खर्चा आ सकता है. लाइक वो तो उससे 90% सस्ता है. मतलब यू गेट if you end up paying only 10% of what you would pay in US. India में medicines are also 90% cheaper than the global markets. And health insurance premium जो इंडिया में, that is 20 to 40 times cheaper than what is in US and GCC countries, Gulf countries. So let's just take a look at के NRI health insurance के ट्रेंड क्या है इंडिया में. NRIs ने NRI adoption of health cover has increased by 150% in 1 year. यंग एनआरआई जो लेस देन 35 इयर्स है वो 148% से इंक्रीज हुआ है एंड वुमेन जो है वो 125% से इंक्रीज हुआ है. आउट ऑफ दोस 60% ऑफ द पॉलिसीज आर बॉट फॉर एल्डरली पेरेंट्स इन इंडिया. इसका जोग्राफिकल स्प्रेड क्या है इस मेडिकल टूरिज्म का? मेट्रो हब सच एज हैदराबाद, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम, these metro cities are dominating. Tier 3 cities like Thrissur, Kollam, Thane, these are also rising due to better infrastructure and digital platforms. Common claims, for example, respiratory diseases हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट कंडीशनिंग हो गए, infectious ailments हो गए.
रिकरिंग इलनेस हो गया, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगता है। एंड इसमें this kind of a product, this kind of a structure helps you a lot to manage the possibility of medical emergencies. तो मेडिकल टूरिज्म में एक पॉलिसी सपोर्ट एंड डिजिटल पुश की जरूरत है, एक रोल है ना? तो गवर्नमेंट इज रनिंग अ प्रोजेक्ट हील इन इंडिया, देन वी हैव डिजिटल first platforms enable like NRIs to compare, buy and claim remotely. Cashless claims ensures like that this kind of facility ensures that seamless access across the hospital. What is the significance of it? Significance इसका ये है कि इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $13 billion. This offers both world-class care and financial security, positioning India as the global healthcare hub. All right. Anyway, so this is the last question, and I will leave it to you to solve this, and we'll see कि इसका आंसर क्या है tomorrow. All right. Thank you. Thank you for joining us. Have a good day.